हेलो एवरीवन। आज ओएसएससी जेई रो एग्जामटा तो ओभर हो गला मेन एग्जाम। तो यहाँ सेट बी रो क्वेश्चन। तो सेट बी क्वेश्चन रो मु सॉल्यूशन बाहर करी। तो तार क्वेश्चन टी एक्चुअली मुझे क्वेश्चन को स्कान कर रखी तो वो सिक्वेन्शियल रखी पारे। तो मु क्वेश्चन हिसाब से पढ़ी पढ़ी आंसर करुँची आपण मैंने आपण आंसर क्वेश्चन सहित मिलाई देवे ताको। तो 3-day BOD first question. 3-day BOD wastewater sample is 250 milligram per liter at 20 degree centigrade. What is the 5-day BOD? तो यहाँ e to the power minus kt 5-day by e to the power minus kt 3-day रो बाहर करके हम बाहर कैलकुलेशन करिया जार आंसर 342 आसीबो। एठी हमको e to the power minus kt रो आंसर हमको ऑलरेडी दे देछि। हमको आउ ताको मल्टीप्लाई करियो पड़िबोनी। The bacteria which require free oxygen for survival, aerobic bacteria. Then which of the following typical sequence of wastewater treatment? Screening, sedimentation, aerobic oxidation and disinfection. Option B correct answer. Activated sludge process is a suspended growth process. In the mid section formula এটা question answer all the above. Then question number 12, central line method रे आमे केमती एस्टिमेट करछन्ती एटा भी आंसर all the above. देन 12 mm थिक प्लास्टर 100 स्क्वायर मीटर पर आम केते क्वांटिटी सीमेंट लगे ना 0.274। तो केमती कैलकुलेशन करवा ना कैलकुलेशन करवा 1.95 आमर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट डिवाइड बाय 7 एटा होची आमर 100 स्क्वायर मीटर पर 12 mm थिक प्लास्टर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एक्चुअली आंसर आसे 0.278 आछे। तो ता पाखापाखि ऑप्शन हो 0.274। देन आमको एटा डिप्रिसिएशन विषय किसी क्वेश्चन अच्छी। The original cost of an equipment is 10,000. Its salvage value is at the end of the total useful period of 5 years is 1,000. The book value is क्या? तो हम फास्ट केन कैलकुलेशन करें 10,000 1000 माइनस कर दवा केते वर्ष तक यूज करते ताको डिवाइड कर दवा जहाँ बाहर से 10,000 माइनस कर दवा जेते वर्ष पे देथिबो। तो आंसर आसे 6400। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the gross vehicle weight of a truck is 30 ton. The rolling resistance 30 kg per ton. Then tractive effort. तो tractive effort केते 900 kg। केमती कैलकुलेट करना 30 into 30। तो वेट करंतु लास्ट जाए मु लास्ट मोर प्रेडिक्शन रो कटअप कहिबी। The excavation of earth is done manually, then it is cost 10 per meter cube. A machine excavated at fixed cost of 4,000 plus a variable cost of 2 per cubic meter. The quantity of earth which is cost excavation of machine will equal to cost of excavation of manual. मैंने आम गोटे लोक जदि एक्सकेवेट कर 10 टका नौ पर मीटर क्यूब मेसीन फिक्स कस्ट हो 4000 प्लस 2 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब 2 टका एक्सट्रा। तो से हिसाब से कैलकुलेशन कर इक्वेट करके आमर आंसर 500 CBM बाहर। देन फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेंथ सीमेंट मोटर जो यूज हुए सीमेंट कंप्रेसिव टेस्ट करने मोटार प्रोपोर्शन हुए कहते 1:3। देन साउंडनेस टेस्ट आम जो रोचे लीच एटलेस apparatus. Then plywood bonding together layers of wood in such a way that the angle between grains of any layer to grain adjacent layer is 90 degree. Then initial setting time of Portland cement केते रहे दरकार not less than 30 minutes. Then stair should have pitch of 25 degree to 40 degree. Then the arc length of if the length of arc or chord is 20 meter, then 1 degree curve of radius is 1146 meter. If the height between floor is 3.64 and the riser is 14 cm, the number of tread will be 25. Can balance 3.64 divided by 0.14 minus 1. Number of brick केते बाहरिबो हमरो 100 meter cube ना 50,000. Next question, the moment of inertia of a rectangle at base B and H about the base of rectangle is BHQ by 12. Then a block of wood 2 meter long, 2 meter wide and 1 meter deep floating horizontally. यदि तार डेंसिटी केते ना 800 kg per meter cube ताले केते वॉल्यूम रो वाटर डिस्प्लेस हो जति की वॉल्यूम जति की वेट हो हमर कार वुडन ब्लॉक रो
तो आम तो केमती कैलकुलेट कले ना 0.8 इंटू 2 इंटू 2 मैंने आम 800 इंटू 2 इंटू 2 कले बाहर 3.2 मीटर क्यूब देन मैंने 800 कम तो 0.8 क्या कल स्पेसिफिक ग्रेविटी करदेली बाहर करदे ये क्वेश्चन है कौन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड हैविंग विस्कोसिटी 0.06 पॉइंट्स एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.025 तो आम जानते काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू विस्कोसिटी बाय रो तो सही फर्मुला पकेले आमर आंसर आस 2.4 देन ड्राई सॉइल हैज ए मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.35 and specific gravity of soil is 2.7 the void ratio will be 2.7 by 1.35 minus 1 तो आंसर आसो 1 if natural water content of a soil sample is 40% the specific gravity is 2.7 and the void ratio is 1.2 then degree of saturation Wg is equal to AC वाला रिलेशन पकड़ दिला हमें से डिग्री ऑफ सैचुरेशन AC इक्वल Wg by E 90% बाहर कर परिया then weighted perimeter of a region channel is discharge of 64 cubic लेसी थ्योरी हिसाब से हमारा weighted perimeter region channel केमते हो ना 4.75 रूट ओवर ऑफ डिस्चार्ज रूट ओवर ऑफ क्यू तो 4.75 रूट ओवर क्यू 38 मीटर आंसर बाहर then the maximum compressive stress of concrete for design purpose is 1.5 the square pipe of side 60 cm carries a discharge of 3 meter per second actually discharge हम के 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड हम यूनिटी मिस्टेक अच्छी देन फ्लो वेलोसिटी के ना आम जानते डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया वेलोसिटी तो डिस्चार्ज तले आम एरिया डिवाइड करते बाहर जाओ वेलोसिटी के 8.33 देन ट्रायंगुलर चैनल मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के ना 1:1 यार जब पचार एंगल के 45 डिग्री तो tan 45 जब बाहर करें 1:1 आंसर आसो देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिकेन्स फर्मुला आमर फर्मुला कौन ना a टू द पावर आमर एरिया f टू द पावर 3/4 देन नेक्स्ट क्वेश्चन ए पाइप 30 cm diameter carries a water velocity of 20 meter per second at a point A on the pipe measured pressure and elevation is 360 km per meter square and 30.5 meter what is the pressure at head A तो यहाँ बर्नौल्स इक्वेशन आम अप्लाई करिया P by rho g plus v square by 2g plus z जो डाटम हेड तो ये आमको डाटम हेड वगैरह सब देती तो आम कैलकुलेट कले 86.5 आंसर आसो then 5 meter cube if 5 meter cube of certain oil weighs 40 kg then specific weight of and density of the particle तो रेस्पेक्टिवली हम केते डेंसिटी बाहर स्पेसिफिक वेट के बाहर ना 1 by rho g बाहर कर परिबा तो 8000 न्यूटन पर मीटर क्यूब और 800 kg पर मीटर क्यूब देन द प्रेशर इन मीटर ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट टू 80 मीटर ऑफ वाटर जदि 80 मीटर ऑफ वाटर रहो से जगह ऑयल केते मीटर हाइट रहो तो आम प्रेशर इज इक्वल टू rho g इक्वल फॉर्मूला पकेले आयर आंसर 100 आसो देन रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी डेल्टा एंड बेस डेल्टा इज इक्वल टू 8.6 पर बेस बाय ड्यूटी calculate the delta of the crop duty of the base period is 120 is 1728 hectare तो आमर आंसर आस 0.6 8.6 पर b by d आंसर सॉरी 8.6 पर b by d आम पकई पारे फॉर्मूला then 64 number question the actual length of Euler's column for both end fixed है 0.5 L पकेबा L by 2 जोटा हम कहे then if the shaft is 120 rpm under torque of 1200 Newton meter the power transmitter actual answer है 4.8 by kilowatt hour बाहर तो 4.8 तो ऑप्शन ने पाए देनी तो नेक्स्ट ऑप्शन जब हम देखिए 6 by kilowatt hour हम देन आमको नेक्स्ट क्वेश्चन पचार इफ द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल इज 40% डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 85% देन परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड हम केन बाहर करिया ना परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड होची हमर कोन एसी एयर कंटेंट 1 माइनस डिग्री ऑफ सैचुरेशन आउ परसेंटेज एयर वॉइड होची कोन ना पोरोसिटी इनटू एयर कंटेंट तो कैलकुलेट कले 6% आंसर आसीबो सॉइल हैज ए लिक्विड लिमिट ऑफ 60% सिंकेज लिमिट 20% प्लास्टिक लिमिट 30% आमको पचार लिक्विडिटी इंडेक्स के लिक्विडिटी इंडेक्स के बाहर ना डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू एल बाई आई पी तो आंसर के 0.383 आसो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी बाई आई पी नेक्स्ट क्वेश्चन 68 if the specific gravity of soil is g and void ratio critical hydraulic temperature g minus 1 by 1 plus c 69
What is the quantity of cement in kg required for preparing 1 cubic meter of cement mortar of 1:4 proportion? आसो कहते हैं 374.4 ये आमको क्वेश्चन देती कौन ना आमको क्वांटिटी ऑफ सीमेंट वेट सीमेंट बाहर कर ना कि ड्राई सीमेंट बाहर कर तो वेट सीमेंट आम कौन प्रोपोर्शन पकड़ा ना 1.3 मैं 30% जो एक्सट्रा आम ने 1.3 हूँ मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट डिवाइड बाय प्रोपोर्शन एडिशन प्रोपोर्शन 1 + 4 5 इंटू 28.8 इंटू 50 कले आंसर आसो ये The quantity of plastering of two face of a 5 meter long and 3 meter high and 40 centimeter thickness wall. तो quantity of plaster कहते हो ना 5 into 3 into 2 तो 30 centimeter 30 square meter if the quadrilateral bearing आम देइछि n 20 degree west ताले आमर होल सर्कुलर bearing केते हो ना आम केते करें 360 minus 20 कर दबा 340 for simple shoulder beam maximum per meter deflection is 1 in 325 तो यहाँ जदि आम था क्वेश्चन जे आरसीसी बीम के आम 1 in 350 मारी था कि एक्चुअली आम स्टील बीम पचार स्टील बीम 1 in 325 हम स्टील स्ट्रक्चर तो ये पचार आम स्लेंडरनेस रेशियो केते हम अंशपट लेंथ देती आमको लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन देती तो L/R आम समस्त फॉर्मूला जानते तो आंसर 80 आसवा फॉर फॉर्मेशन विड्थ ऑफ अ डबल लाइन ब्रॉड गेज डबल लाइन पे कितने ना 10.67 एक्चुअली एटा 10.23 आर वैल्यू द प्रॉपर ड्रेनेज आर्देन रोड शुड हैव मिनिमम ग्रेडियंट ऑफ 1 in 50 द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 100 mm द ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग सेल्फ इन वेलोसिटी इज 1 in 60 ये क्वेश्चन डाटा इनसफिशिएंट अच्छी कि जब मिनिमम वेलोसिटी 0.45 नहीं जावा ताले यार आंसर 1.36 आसो कौन देजी ना द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर स्फीयर ट्वाइस द डेप्थ ऑफ व्हाइल द डिस्चार्जिंग 1.5 मीटर पर सेकेंड डिस्चार्ज पुणी भूल देला 1.5 मीटर पर सेकेंड व्हाट इज द विड्थ ऑफ स्फीयर हम वेलोसिटी देते हम विड्थ आराम से बाहर कर देते एरिया एंड वेलोसिटी वाला फॉर्मूला पकई तो जब हम वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी ना 0.45 मीटर पर सेकेंड ताले हम को कैलकुलेट कर परिबा The next question for slump value 150 to 175 माने हम गोटा हाई स्लम्प मिला हाई स्लम्प आम हाई कंपैरेटिव फैक्टर चूज करिया जोटा कि एबव 0.9 the bending moment at the center of the fixed beam of a span of L meter carrying an uniformly distributed load W per meter तो आम फिक्स्ड बीम सेंटर बेंडिंग मोमेंट केते हो कहूँ W L स्क्वायर 24 नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल से गोटे बीम यदि टू वेट पर मीटर जब आम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पड़ो 2 यूनिट लोड पड़ो आमर ताहले डिफ्लेक्शन सेंटर केते हम आम जानते सिंगल जब लोड पर 5 WL पड़ता है 3 पर जाए टू पड़े कौन हम ना 5 WL पड़ता है 192 जाए तो 192 हूँ ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन द ट्रापेजोइडल चैनल सेक्शन हैविंग बेड विड्थ 8 मीटर फ्लो डेप्थ 3 मीटर साइड स्लोप 2h to 1.5 b तो मैनिंग्स फॉर्मूला हिसाब से वेलोसिटी केते हो ना 0.64 हम मैनिंग्स फॉर्मूला जानचे कौन 1/n r to the power 2/3 s to the power half तो ये r होची कौन ना आम के बाहर करिया r होची हाइड्रोलिक रेडियस एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर a/p तो कैलकुलेट कले हमर बाहर जी आंसर एठी तो जो 2 to the power 0.667 देछि ये डायरेक्टली r आ जाएगा अपन 2 to the power 0.1.6 पके दे तो आंसर बाहर जीवो 0.64 a canal carrying discharge of 20 cubic and cultivable command area of 20,000 hectare rabi crop 80% base period 120 days duty of canal केते होबा ना 800 हेक्टर पर क्यूमेक जदि हमर कैचमेंट 5 स्क्वायर किलोमीटर जदि 5 घंटार कंटिन्यूअस रेनफॉल होची 10 mm 15 mm 20 mm 22 mm 5 mm रेस्पेक्टिवली तो मैक्सिमम आम केते रेनफॉल केते वॉल्यूम रेनफॉल रिसीव कले ना टोटल रेनफॉल वॉल्यूम को टोटल रेनफॉल को मिसई दबा मिसई देके आम मल्टीप्लाई करदा कास तो ना 5 स्क्वायर किलोमीटर सहित तो आंसर है 316 × 10³ मीटर क्यूब देन आमको लैटिट्यूड डिपारेचर बाहर करने देछि इफ द रिड्यूस्ड बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज n 60 डिग्री वेस्ट एंड लेंथ इज 100 मीटर लैटिट्यूड एंड डिपारेचर रेस्पेक्टिवली आर केते हो ना आमर जेहेतु ए क्वाड्रेंट रोची लैटिट्यूड पॉजिटिव हो डिपारेचर नेगेटिव हो देखो सेटा कोड देछि तो सेटा ऑप्शन बी रे जाउची आंसर करेक्ट जोटा कि 50 मीटर आउ 86.6 लैटिट्यूड हो एल cos थीटा डिपारेचर हो
L sin theta. If the whole circle bearing is 210 degree, then reduce bearing केते होगा ना is 30 degree west. फोर बेरिंग और बैक बेरिंग देजी तार करेक्ट फोर बेरिंग बैक बेरिंग केते होगा जान फोर बेरिंग प्लस माइनस बैक बेरिंग इज इक्वल टू 180. फोर बेरिंग प्लस माइनस बैक बेरिंग इज इक्वल टू 180. ताले आम केते होगा ना 96 डिग्री 15 मिनट और 276 डिग्री 15 मिनट. तो ये जो स्ट्रक्चरटा देखिए ये गोटे डेफिशिएंट ट्रस केमती बाहर कली ना एम प्लस आर इज -2j इज इक्वल जब आम लेस देन 1 हो डेफिशिएंट ट्रस आम लेस देन 1 आस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन हो कौन ना द बियरिंग ऑफ लाइन ए बी एंड बी सी देखिए 146 डिग्री 30 मिनट एंड 68 डिग्री 30 मिनट और इंक्लूडेड एंगल के ना 102 डिग्री. देन नेक्स्ट क्वेश्चन टैकोमीटर के टैकोमीटर ऑफ द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एडिटिव कांस्टेंट के ना 100 और 0. रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व आम जदि 5 टाइम्स हो ट्रांजिशन कर्व देन स्पाइरल एंगल के ना 110 टाइम रेडियन हम. WBM रोड लोकालिटी आम हेवी रेनफॉल केते वैल्यू रिकमेंड करा 1 in 33 टू 1 in 40 दि जाए. तो जेहेतु ऑप्शन 1 in 36 अच्छे 1 in 36 चूज करिया. नेक्स्ट क्वेश्चन for design of super elevation mixed traffic condition the speed reduced by 25%. Magnitude of super elevation for Indian Railway on broad gauge is 1.315 v square by r. According to which principle each group of activity with the same objective must have one head one plan, that is unity of direction. The peak of 4-hour flood unit diagram is 240 meter cube per second. The rainfall excess is 80 mm. Base flow 40 meter cube per second. Peak of 4-hour unit diagram केते होगा ना 25 meter cube per second. The development length of 20 mm diabar M25 415 grade steel ପାଇଁ କେତେ ରହିବ ନା 806 mm. ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତ ଫର୍ମୁଲା सिग्मा s by 4 tau bd. आउ जेहेतु एटा आमर AP415 आउ गोटे 60% तले एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हम. व्हेन द स्टील एरिया AS is to be converted into area of concrete AC, then net area increase by केते हो ना M into AS. एटा आपण माने देखि दे कोथिरे ना आमे तले ट्रांसफॉर्म सेक्शन तयारी करछंती एथिरे एठी हम लिखुछंती M into AS. एटा से कथा क्वेश्चन पचार हमको स्टील एरिया को कंक्रीट कन्वर्ट करछंती. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन. शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू C plus sigma tan phi. नेक्स्ट क्वेश्चन आर्क प्रेशर केते हो जदि हमर डेप्थ होची 10 मीटर आउ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री आउ वेट होची 1.8 टन पर मीटर क्यूब. तो 1.8 टन पर मीटर क्यूब के हबो केते 1/3 into 1.8 into 10 तो 6 टन पर मीटर स्क्वायर. Then next question, if the soil is water content in the soil 40 degree 40% G 2.7 void ratio 1.35 then degree of saturation is same formula W is equal to AC. तो इधर degree of saturation बाहर जो 80%. The cohesion of soil contain quick condition यदि आमर quick condition है जीवो ताले bearing capacity भी 0 हो जीवो और shear strength 0 हो जीवो. तो shear strength of bearing capacity depend करूची से bearing capacity भी 0. And the next question, natural water को moisture content हम देइची liquid में देइची plastic में देइची हम पचारि से liquidity index और plasticity index रा रेशियो केते ना रेशियो तार 2 आसीबो आंसर. तो अपन liquidity index बाहर कर देंतु 0.4 आसीबो. 0.4 को हम परसेंटेज रे कन्वर्ट कर दवा कोठी की ना 0.4 परसेंटेज हेले 40% हम 40% by 20% आसी हमर आंसर 2. एसेंशियल नॉन मेटालिक कोटा हम ना हमर नॉन मेटालिक हम ग्रेनाइट मार्बल और लाइमस्टोन. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर. देन which of the following not a measure of sustainable water management, reducing the rate of surface runoff. Then next, the magnetic bearing of a line is 50 degree 30 minute 58 degree 30 minute and declination 4 degree 30 minute east. ताले ट्रू बियरिंग केते हो ना हमें जानछे ईस्ट के लिए माइनस करिया 4 डिग्री 54 डिग्री आंसर आसे करेक्ट. Then staff held at benchmark
140.5 मीटर RL reads 1.65 माने एटा BS देला ताले x रो RL केते होला ना 140.5 प्लस 1.65 ए बजाउची a रो रीडिंग केते a रीडिंग केते होला माने इंटरमीडिएट अपर साइड देला केते 1.545 तो एति को 1.545 माइनस कले 140.605 आंसर आछो। देन ओवरटेकिंग व्हीकल जो जाउची तार डिजाइन स्पीड होची 25 मीटर पर सेकंड। ओवरटेकन व्हीकल जो जाउची तार एक्सीलरेशन केते ना 1.5 मीटर पर सेकंड। जे व्हीकल ओवरटेक करची तार स्पीड होची 15 मीटर पर सेकंड। तो हम पचारची आमर ओवरटेकिंग टाइम केते हो t इज इक्वल टू 4s बाय a रो रूट ओवर। तो s केते ना 0.7 vb प्लस 6। तो ये vb माने कौन ना जी व्हीकल आमर ओवरटेक करची कि ओवरटेक करची ना 15 मीटर पर सेकंड रे। तो आम ताको अप्लाई कर देले आंसर आस 8.12। If the width of carriageway is 12.5 meter, outer is 50 meter से 50 cm हाइट देछि ताले हम एटा एमती कैलकुलेट कर दे एटा 50 cm एटा 12.8 मीटर 12.5 मीटर। तो आंसर आस ग्रेडियंट केते ना 1 in 25। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन रोड 0.2 मैक्सिमम सुपरलेशन 1 in 25 सॉरी 1 in 15 आ जदि आर रेडियस 100 होबा केते होबा आंसर। तो एक्चुअली तो हमर आपण मान जानते आईआरसी स्पेसिफिकेशन हिसाब रे एटा 0.15 होबा। तो 15 हिसाब कैलकुलेशन करके हम बाहर करके 52.39। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटरबाउंड मैकाडम रोड करेक्ट सीक्वेंस कौन ना ड्राई रोलिंग एप्लिकेशन ऑफ स्क्रीनिंग वेट रोलिंग एप्लिकेशन ऑफ फिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर जो डिग्री ऑफ कर्व केते होबो जे 30 मीटर आमर चेन रोच साकर चेन रो टेप रोच डिग्री ऑफ कर्व केते हो ना 1720 सॉरी रेडियस ऑफ कर्व केते हो ना 1720 मीटर। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्लीपर जदि स्लीपर डेंसिटी m + 5 100 मीटर ट्रैक लेंथ पाई ना 144 नंबर आसीबो। केमति हम कैलकुलेट कले ना m होची हमर कोन ना केते मीटर गज केते मीटर ट्रैक लेंथ 13 मीटर 13 + 5 18 100 by 18 कले सॉरी 100 by 18 बोले कले 13 by सॉरी 18 by 13 into 100 तो आसी आंसर केते 144। Deflection of simple supported beam at center of span carrying uniform load W per unit run तो entire span ने हमर deflection केते हो ना 5 WL by 384 EI। What is the tensile force required to cause elongation of 0.045 mm steel rod 1000 mm length and diameter 12 mm 102 kg। Cantilever beam carries a distributed load W over the whole length and force W at its free end। The net deflection is free end will be 5 by 24 WL by EI upward। केन बाहर करिया ना दीटा डिफ्लेक्शन माइनस कर दबा अपवर्ड डाउनवर्ड को। माइल्ड स्टील रॉड 14 mm डायमीटर 154 mm लेंथ elongates 0.025 mm under an axial pull of 10 kN। What is the Young's modulus of material? Young's modulus of material केते होबा ना 4 into 10 power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर एक्चुअल होबा। एठी टिके प्रिंटिंग मिस्टेक अछि। For a simple supported beam which statement is true? तो एटा ऑप्शन all the above होबो। Triaxial shear test preferred because of over direct shear test it can perform under all three conditions with complete control। Then for determining moisture content of a sample there is 260 gram weight of container और soil there is 320 weight of soil sample 310। तो आंसर आस 18%। हम केंति कैलकुलेट करना W2 - W1 कले हमें बाहर करता वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड करके बाहर करिया। लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट आमर कॉलम रे केते रहे ना मिनिमम 0.8 मैक्सिमम 0.6 तो ऑप्शन डी। देन बिल्ट अप बीम केस रे आमर एक्चुअल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस एफबीसी केते हुए ना m/ixx into y। The central deflection of simple supported beam of length L concentrated load W at center WLQ by 48 EI। Load factor is ultimate load by working load। A steel plate is 300 mm wide and 10 mm thick। One of the rivet is nominal diameter 18 mm is driven। What is the net cross sectional area of the plate? That is 2805 mm square। sorry
2820 mm²। नेक्स्ट कैलकुलेट द पॉपुलेशन फॉर द गिवन डाटा 2030 पाई। तो ये आंसर 62,500 आसो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5 डिग्री ब्रॉडगेज ट्रैक में आमर ग्रेडियंट केते रहइबो ना 1 and 250। जदि जी आमर गज हम v वेलोसिटी हम ताले इक्विवेलेंस पॉपुलेशन कौन फॉर्मूला पड़ो gb²/127r। देन फॉर डिटरमाइनिंग यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट क्यूब इज बेटर टेस्ट स्पेसिमेन कंपेयर टू सिलिंडर and stress distribution more uniform over the cross section of a cylinder compared to cube। ना एटा ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ए शॉर्ट कॉलम ये जो क्वेश्चन अच्छे ये आमर डाटा इनसफिशिएंट अच्छे M20 415 ना ताल आंसर 1069.23 किलोमीटर भाग ना अदरवाइज आपको फ्री क्वेश्चन मिलला। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इज ऑल द वेब। तो ये क्वेश्चन सरी जाइए। तो मो एक्सपेक्टेड कटअप होची कौन ना जनरल पिला 60 to 65 टा क्वेश्चन जो मैंने अटेंड कर पूरा प्रॉपर माइनस मार्किंग जाएगी। यदि आपंकर 120 ରୁ 130 आसुचे ताले सेफ स्कोर आउ जदि 100 ରୁ 120 आसुचे से भी सेफ स्कोर बोली तो कहीपर किंतु किसी कही हेनी कारण पिला एत अच्छा पोस्ट भी बहुत बाहरी। तो 60 to 65 क्वेश्चन करेक्ट गुड अटेम्प्ट बोले कहवा। 50 to 60 भी चांस अच्छे और बिलो 50 टी लेस चांस अप टू डिविजन से पाइबे तापर कही हेनी सेमती। थैंक यू।